आगे बहुत जगह है। आ जाइए आप लोग। यहाँ लेडीज साइड पे भी बहुत जगह है, आगे आगे आ जाइए। शांत हो छीन के गुणों के कहानी वर्धमान महान से बिछड़े हमारे यहाँ। सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणा चैनम जयतु शासनम। चैनम जयतु शासनम। चैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। वन्दे तत्कुणलब्धये। वन्दे तत्कुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुनकुंद आचार्य देव और उनके द्वारा प्रणीत यह अद्भुत ग्रंथाधिराज जिसका नाम है समय सार। और काफी मिसकंसेप्शन इस ग्रंथ के बारे में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज फॉर नॉट द लेमेन्स लाइक अस। बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि जब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका लिखते हैं तो फिर वे बता देते हैं क्लियरली कि ये एकदम फर्स्ट स्टेप पर जो खड़ा है, सीढ़ी पर जिसने पैर भी नहीं रखा है, नीचे खड़ा है, उस अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए आचार्य देव ने लिखा। और हम उसी कमेंट्री को थोड़ा समझना चाह रहे हैं। इतना सुंदर माहौल है, इतना सुंदर आयोजन है दशलक्षण धर्म महापर्व का। चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज इट, क्यों ये अष्टानी का पर्व, दशलक्षण धर्म महापर्व, व्हाई दे आर कंसीडर्ड लाइक अष्टमी चतुर्दशी, व्हाई दे आर कंसीडर्ड सेक्रेड। भाई क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि इन 10 दिनों में एवरीबडी जो 355 दिन मंदिर के आसपास भी ना फटका हो, वो भी भूला भटका आदमी इन दिनों में एक बार तो भगवान को अपना चेहरा दिखा जाता है। इट्स नॉट दैट वो भगवान का दर्शन करने आते हैं, इट्स दैट भगवान के सामने वो दर्शन देते हैं। इट हैपेंस राइट। अरे तो क्या ऐसा क्या है? तो वहां बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंगो, राइट? सो इन इंडिया द मैंगोज दे राइप इन विच सीजन? समर, राइट? व्हाई समर? क्यों भाई, गर्मी में ही क्यों मैंगो सारे पके जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं?
Why not in winter? Why not in rains? Why? There is no logic to anything. It is what it is. It is the very nature. तो जैसे फ्रूट्स अपने सीजन को फॉलो करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स अपनी डेमोग्राफीज को फॉलो करती हैं, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का वातावरण होता है, दीज आर दी सीजन्स दैट विजिट दी वेरी सेम स्पेस. तो अभी यहां समर चल रही है. आई डोंट नो हाउ यू रिलेट टू इट एज समर, बट चल रही है, राइट? सो क्यों हुआ? और फिर विंटर क्या है, राइट? स्प्रिंग क्या है, ऑटम क्या है? तो ऑल दीज आर दी सीजन्स. सिमिलरली जीव के परिणामों के भी सीजन्स होते हैं. एंड वहां पर कुछ ऐसा होता है कि कोई बहुत वक्र परिणाम वाला भी, बहुत कठोर परिणाम वाला भी हो, यदि इन दिनों थोड़ा पुश करे तो जैसे वो स्लाइड करता जाता हो. बहुत महात्म्य है इन दिनों का, क्योंकि इन दिनों में जीवों के परिणाम नेचुरली ही भीगे हुए होते हैं. आप किसी से बोलोगे किसी दिन के चलो आज अपन ये नहीं खाते, वो बोलेगा क्या लगा रखा है. पर आप आज के दिन बोलो कि चलो आज के दिन वी कैन एक्सक्यूज, विल नॉट गो आउट एंड ईट, तुरंत मानेगा वो, ठीक है यार चलो विल डू इट टुडे. यस. तो ये वातावरण ही कुछ ऐसा है. यदि हम इस वातावरण में, जो तीर्थंकर महावीर भगवान ने अपने समव शरण में 2500 साल पहले कहा था, यदि हम व्हाट इफ उस पर थोड़ा डिस्कशन करें, यू नेवर नो, हमारा सीजन है, हम शायद जो काम साल के बाकी दिनों में ना कर पाए, साल भर आकर भी वो शायद इन कुछ दिनों में इजीली कर पाए. बराबर. आप सबको कैसा फील हो रहा है आफ्टर डूइंग दी पूजा? आर यू फीलिंग गुड और बैड? फीलिंग अ बिट लाइट कि थोड़ा हैवी हो गया है? राइट, यू ऑल आर फीलिंग गुड. ठीक है, तो मुझे थोड़ा स्माइल करके बताइए. यस यस. यू, देयर इज नो रीजन टू बी सैड. अभी इतनी सुंदर मंगल प्रभात हुआ है. तीन लोग के नाथ का दर्शन, स्पर्शन, अभिषेक, पूजन हम सभी ने किया है. दिस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स ऑफ आवर लाइव्स. सो अब हम सब थोड़ा रोमांटिक होके बात को शुरू करते हैं. राइट, सब दोहराएंगे. आतम महबूब यार, आतम महबूब, आतम महबूब यार, आतम महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, आतम महबूब यार, आतम महबूब, आतम महबूब यार, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब. क्या बात है. आई वॉज कमिंग मॉर्निंग में, तो नीपा जी के साथ आई वॉज कमिंग एंड देन शी हैड टू गो टू पार्क दी कार, राइट? तो साथ में आरवी थी और उन्होंने आरवी से बोला पंडित जी को लेके जाना. ओके, सो आरवी was responsible for escorting me to this temple. तो आई वॉन्टेड टू आस्क आरवी कि यार आरवी, मैं आपको लेके जा रहा हूं या आप मुझे लेके जा रहे हैं? इट हैपेंस, राइट? मैं अभी वाशी में वार्षिकोत्सव था, तो आई स्टेड इन ऋषु भाभीज हाउस एंड उनकी भी एक छोटी डॉटर है सिद्धि, एंड सर्वार्थ इज दी बॉय, छोटा सा है यार, 7-8 years. एंड वी हैव टू गो टू स्वाध्याय भवन, तो पूरा रोड क्रॉस करके बहुत हैवी ट्रैफिक होता है. एंड देन ही टोल्ड सर्वार्थ कि चलो भैया को लेकर जाओ. So on the way, I asked Sarvarth, Sarvarth, you are taking me or I am taking you? You tell me. मैं आरवी को ला रहा था या आरवी मुझे लेकर आ रही थी? टेल मी. आप कभी बोट पर बैठे? वो चप्पू वाली बोट कभी देखी है आपने? व्हाट डू यू कॉल दैट चप्पू? हाँ, पतवार. या इन इंग्लिश व्हाट डू यू कॉल इट? सॉरी. ओके, कानू. ओके फाइन, व्हाटएवर. ठीक है. हाँ, तो आप एक बोट पर है और आपके हाथ में पतवार है ना? एंड आपने उस बोट को नदी में उतार दिया, आप उसके ऊपर बैठे. आई वॉन्ट टू आस्क, आप बोट को चला रहे हो कि बोट आपको चला रही है? प्लीज 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 एवरीबॉडी, क्या कौन बताएगा? यस यस.
ओके, तो न्यूटन चला रहा है। ओके, या तो चला कौन रहा है? फिर एंड किसने किया? वाह वाह, यस बेटा प्लीज। You, you're controlling the boat as if you didn't, then the boat will just stop. Really? So if you didn't do it, the boat will just stop and it won't move. So technically, you're controlling the boat and making it move. Okay, so I am making the boat move. Yes. So I had to move. बोट का तो मन नहीं था कि चलो इस किनारे से उस किनारे जाते हैं. I had to move, right? And I can move, and I can make the boat as well move. तो इस स्टोरी में मैं बोट को क्यों फंसा के लाया हूं? Should I not be moving alone? तो मतलब मैं अकेले खुद को पार नहीं कर सकता हूं, लेकिन बोट को पार कर सकता हूं. थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा. What is happening? Two people together walking. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल. मैं बोट को चला रहा हूं या बोट मुझे चला रही है? और इट ओनली डिपेंड्स कि हम किसकी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं. यदि बोट की एक मीटिंग और स्वाध्याय चल रहा होता एंड यू वुड आस्क देम कि किसको कौन चला रहा है, दे वुड ऑलवेज से कि अरे अपनी बेचारे आदमी लोगों को लेके जा रहे हैं, राइट? बट व्हेन, बिकॉज वी आर नाउ द पीपल हु आर डिस्कसिंग, वी वुड से कि मैं बोट को चला रहा हूं. बट दोनों ही तरीके में विसंवाद की पॉसिबिलिटी है. आरवी मुझे लाए या मैं आरवी को लाऊं, इन दोनों में झगड़ा हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बट यदि मैं ये बोलूं कि बोट बोट को चला रही है और मैं खुद को चला रहा हूं, मैं मेरे को ला रहा हूं, आरवी आरवी को ला रही है, जब हम इंडिविजुअलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं तब बातें दोनों हो जाती. सही बात भी है या नहीं? या इट्स द ट्रुथ. लाइक आप लोग ड्राइव करते हो कार को? लाइक हु ड्राइव्स द कार? लाइक ऑलमोस्ट हियर. यस, कैन यू स्टैंड अप प्लीज? हाउ डू यू ड्राइव द कार? नहीं, प्रवचन मैं करूंगा. यू जस्ट टेल मी हाउ डू यू ड्राइव द कार. ऐसे करते हो? ऐसे करते हो? नहीं, अब तो नहीं होता है ऐसा. अब तो अब ऐसे करते हो, राइट? ठीक. हाँ, देन व्हाट डू यू डू? टेल. तो चलाते कैसे हो ये तो बताओ. हाउ डू यू ड्राइव? जस्ट सी एवरीबॉडी, आई थिंक. हाँ हाँ, कैसे 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 कैसे? लाइक दिस. ठीक है. कार कैसे चलाते हैं हम? रोटी कैसे बेलते हैं हम? राइट. पैडल कैसे मारते हैं हम? नहीं खड़े रहिए दो. ना आई वॉन्ट, इफ यू डू लाइक दिस हियर, क्या कार चल रही है? नहीं चल रही है, डेफिनेटली नहीं चल रही है. तो कार के अंदर जाके कुछ स्पेशल आप करोगे कि कार चलेगी? व्हाट स्पेशल वुड यू डू? नहीं, कार को आप स्टार्ट करोगे कि कार स्टार्ट करेगी? सोच के बताना. यू विल पुश द बटन. और क्या करोगे? फिर कार में अपने इग्निशन से वो स्टार्ट, ज्यादा ठंड होगी, बैटरी बैठ गई, इट विल नॉट स्टार्ट. ऐसा यहां नहीं होता होगा, इंडिया में बहुत होता है, राइट? ठीक है. सो या राइट, आपका क्या काम है? ऑल दैट यू आर डूइंग इज द सेम थिंग्स दैट यू आर डूइंग हियर. व्हाट एल्स आर यू डूइंग इनसाइड द कार? डांट तो नहीं रहा हूं, सॉरी. हम कार के अंदर नया क्या करने वाले हैं? टेल मी. हम इन सारे एक्शंस के अलावा व्हाट एल्स डू वी डू? वी आर जस्ट रिपीटिंग दोस. अभी मैं जब हवा में उठा रहा हूं तब मैं जैसे हाथ हिलाऊंगा तो एक स्टीयरिंग व्हील हाथ में होगा. बट इवन देन आई एम नॉट मूविंग द व्हील, आई एम मूविंग माय हैंड. और यू आर मूविंग द व्हील, द स्टीयरिंग व्हील. व्हाट डू यू मूव?
एंड कई बार वो लॉक होता है, जब कार बंद होती तो यू मूव योर हैंड बट इट डज नॉट मूव. व्हाई? Because it has to move for you to move it. So the best you can move is your hands, right? तो हमारी primary ownership, primary doings is what we are restricted to ourselves. हम क्या करते हैं? हम अपना परिणाम करते हैं. क्या करते हैं? Thank you. Can you please clap for him? मैं वापस आपसे पूछता हूं, लाइक यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो गाथा पढ़ रहे हैं वो गाथा इतनी सुंदर है, गजब की है. कैन वी हैव थर्ड गाथा? यस सर, एक बार पढ़ते हैं सब. एयत निश्चय गदो सम ओ सवथ सुंदरो लोगे बंद कहा एयते तेण विसंवादनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में वे थी बने बैठवा धन कथा एकत्व मा. क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आप सबके घर पर मिक्सर ग्राइंडर है, राइट? यू ऑल हैव. एंड टोमेटोज, डू यू गेट टोमेटोज इन दिस कंट्री? या व्हाट विल वी डू विदाउट इट? ठीक. तो अच्छा, आप लोगों से टमाटर की चटनी बनाते आती है? यू नो हाउ टू मेक चटनी ऑफ टमाटर, टोमेटोज, राइट? ठीक है, तो हाउ डू वी मेक इट? Anybody can tell me from this section? I would be just to check whether it is being done the right way. Yes, anybody tell कैसे बनाएंगे टमाटर की चटनी? Yeah, I'm asking you. Mix tomato with in the grinder. So what will we do? You can grind the tomatoes in the mixer. Yeah, so in the grinder you can grind it, Huh. right? So how do you, like, you have tomatoes Yeah. and you have the mixer grinder and you take these tomatoes and put inside the grinder. And then what happens? The grinder will grind it. Yes, the grinder will grind it. Correct? Fine. टमाटर की चटनी कौन बना देता है? Grinder. क्या बनाता है टमाटर की चटनी? कौन बनाता है? Grind. So I also had this, grinder in my house, mixer grinder. So I was just there in the kitchen and I saw the grinder. और उसमें blades होते हैं, right? It has blades, correct? And मैंने खाली grinder को चलाया. What did grinder do? मैंने grinder को चलाया खाली. इसने क्या किया? What did it do? कुछ किया क्या? किसकी चटनी बनाई? क्या किया ये? It was just spinning, right? Everybody, we all are on same page. It was spinning, like it was getting bored, roaming around alone, nothing good to do, constructive, nothing. It was dull job. It was spinning. And then what? Guess what? I added some spices to this. उसकी सूखी सूखी बोरिंग जिंदगी में मैंने ऊपर से 3-4 टमाटर फेंके. And now, did you know what happened? जो सारी blades थी ना, they just bloomed and they spread. और अब जब वो घूम रहे थे ना, they were not just spinning, they were dancing because they were now making the chutney. अब मिक्सर ग्राइंडर क्या कर रहा है? जब आपने टमेटोज डाले हैं, what is the mixer grinder doing? What is it doing? पहले घूम रहा था और अब चटनी बना रहा है. What is mixer grinder doing once you have added the tomatoes? Is it doing the same thing or something different? So is it making the chutney or just going around? तो मिक्सर ग्राइंडर ने टमाटर की चटनी बनाई के नहीं? अरे बोलो. मिक्सर ग्राइंडर ने टमाटर की चटनी बनाई या नहीं? आपके घर में तो बन गई थी.
चटनी, हाँ, तो मिक्सर ग्राइंडर ने बनाई कि नहीं? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. यू आस्क मिक्सर ग्राइंडर, व्हाट विल इट से? मैं तो रास्ते से जा रहा था. It was just going about its usual business. Yes, everybody. और उसके पीछे ऊपर से uninvited guest आ गए. And it was still did not deviate from its own job. And it just kept on doing the same thing. और मैंने क्या बोला? चटनी किसने बनाई? So then I was, मेरे पास कुछ ज्यादा काम होता नहीं है करने को. So again, अभी खाली चला रहा था, मैंने बोला टमाटर की बढ़िया चटनी बना दी है. So I had a few stone pieces which I brought from Himalayas. Okay. And I thought, why not? Now, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर चटनी बना देता है, right? Sure. So then I again, and that's mixer grinder, put these stones. अब बताइए चटनी बनेगी कि नहीं? किसकी? Question would be different. तो अब देखना, समझना इस बात को, क्या ब्लेड्स ऑफ मिक्सर ग्राइंडर वो टमाटर की चटनी बनाते हैं या वो अपना खुद का काम करते हैं? और टमाटर की सॉफ्टनेस, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी टेंडरनेस, उसका वो स्वभाव है कि वह यदि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराए तो देन इट इट टर्न्स इनटू अ चटनी. तो टमाटर की चटनी किसने बनाई है? द क्वेश्चन इज दिस. टमाटर की चटनी बनाने वाला कौन है? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वस्तु अपने एकत्व को लिए ही परिणमती है. It is always working on its own axis and it is only doing its own work. वो अपना काम कर रही है, अपना. लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो अपना काम करती है तो जो क्राइम सीन है ना, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं. कई बार इट्स मिक्सर ग्राइंडर, कई बार इट्स बैड वेदर, कई बार इट्स अ बिट हॉट. तो हर बार अलग अलग वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह पर अपना अपना काम करती हैं. जैसे आग जल रही थी और मैंने आग के ऊपर अखबार लगाया, तो क्या होगा? आग अखबार को जलाएगी कि नहीं? हाँ, तो आग वैसे बोर हो रही थी अकेले जलते हुए, और अब अखबार आया तो नाउ आग हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. तो फायर विल बर्न द पेपर और द पेपर विल बर्न इटसेल्फ, क्योंकि वापस मेरे पास वो हिमालयन स्टोन्स है. आई विल टेक द फायर. आप पत्थरों को आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी? क्यों नहीं जलाएगी बेटा? माइक 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 माइक. आई वॉन्ट टू हियर इट आउट लाउड. यस 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 प्लीज. स्टोन्स It's को the stone फायर क्यों swabha. नहीं जलाएगी? It's the stone swabha. कि पत्थर जलते नहीं है तो नहीं जलाएगी. तो कागज को क्यों जलाती है? कि कागज जल जाता है. तो आग कागज को जलाती है कि खुद जलती है? क्या करती है? द फायर इज बर्निंग इटसेल्फ और इज इट बर्निंग द पेपर? अरे बोलो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्या? एकदम सिंपल है. देखो, मैं इसको एक्सप्लेन तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुजराती में ही पढ़ देता हूं. टीका में जो आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, विसंवाद कहां हो रहा है? वस्तुएं अपना अपना काम अपनी अपनी एक्सिस पर खुद खड़े होके कर रही है. ठीक है? कैन यू बोथ स्टैंड अप फॉर अ मोमेंट प्लीज? यस, कैन यू कम हियर इन द सेंटर? ओके, कैन यू शेक हैंड्स? ऐसे वाला, राइट से लेफ्ट वाला. हाँ, ऐसे, राइट. नो नो, वेट वेट. अरे अरे, ये कौन सा वाला शेक हैंड है? सिंपल वाला करो ना यार. सो नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू बेटा, उनके हाथ को दबाना है. ठीक है? यू डोंट प्रेस योर हैंड. ओके, यू जस्ट प्रेस हिज हैंड. डोंट प्रेस योर हैंड, प्रेस हिज हैंड. ओके, यू हैव टू. ये थोड़ा वायलेंट हो जाएगा. सिट सिट. कैन वी क्लैप फॉर दीज बोथ चिल्ड्रन? मैंने उससे बोला किसके हाथ को दबाइए. व्हाट वाज ही डूइंग?
उसके हाथ को दबा रहा था कि खुद के हाथ को दबा रहा था? व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? मैं उसको बोलने वाला धक्का दो, लेकिन दे देता। सो देन आई स्टॉप। तो मैं उससे बोलता धक्का दे दो, पुश। तो कैसे पुश करता वो? किसको पुश करता वो? किसको पुश करता? क्यों उसको पुश करना था ना? आपको समझ में आ रहा है हम कैसे अपनी सीमाओं में बंधे हैं? हम अपनी बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एट बेस्ट आई कैन प्रेस माई ओन हैंड, और तब दुर्भाग्य से आपका हाथ बीच में फंस जाए तो इट विल बी कॉल्ड कि मैंने आपका हाथ दबा दिया। लेकिन मैंने किसका हाथ दबाया है? अरे किसका दबाया है? क्या मैं आपका हाथ दबा सकता हूं? दबाया तो है। कि ये जो कहने लगूंगा कि दैट आई हैव हर्ट यू, ये झगड़ा पैदा कर देगा, ये विसंवाद है। मैं किसका काम कर रहा हूं? मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सुना रहा हूं? मैं आपको सुना रहा हूं कि खुद बोल रहा हूं? आप लोग क्या कर रहे हो? कि इंडिपेंडेंट हो गया ना? अब मुझे गुरूर हो गया कि मैं इतने लोगों को सुना रहा हूं। ये विसंवाद है। दिस इज वॉट लीडिंग टू द डेथ ऑफ क्षमा, death of Madhav, death of Arjav, because this is not Satya. This is truth. This is not truth. हम झूठी बातों को बहुत सुनते हैं, समझते हैं, पर उसमें इंडिविजुअलिटी को खड़ा नहीं करते। आचार्य कह रहे हैं द होल एफर्ट ऑफ सीमंदर भगवान दिव्य देशना इज, जो आचार्य कुनकुन देव लेकर आए हमारे लिए, वो ये कह रहे हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यहां जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वह सब कैसे हो रहा है? सारी वस्तुएं अपनी अपनी सीमा में रहकर उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, कल ही हमने 6 द्रव्यों के हिसाब से देखा था दैट वी आर नॉट डूइंग लिटरली एनीथिंग। मैंने हाथ ऊपर उठाया है, दिस इज नॉट माई स्टैंड अलोन वर्क, it was work in collaboration with all these 6 substances. I only had the thought to raise my hand up. Then there was this hand which was working, and there was this medium of motion from here till there, hand could move, and then medium of rest because it stayed there. Then there was space and the time that it took. Correct? 6 लोग अपना अपना काम एक साथ कर रहे थे, पर आई चोज टू डू दी आर्ग्यूमेंट। मैंने नरेटिव को अपनी तरफ लिया। किसने हाथ उठाया है? और जहां मैं अपने एकत्व से, अपनी इंडिविजुअलिटी से झुका और मैं स्लिप करके बॉडी का कर्ता बना, या ग्रंथ को पढ़ने वाला, लिखने वाला, मंदिर को चलाने वाला, परिवार को चलाने वाला, पढ़ाने वाला, गाने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, ये कुछ भी बना, मैं जहां अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपने चैतन्यत्व से चित हुआ, वहीं पर आचार्य कह रहे हैं विसंवाद हुआ। और जब विसंवाद होता है, यू नो व्हाट पीपल टॉक। आचार्य देव चौथी गाथा में कहते हैं, लेट्स हैव अ रीड। सुद परिचिदानुभूता सवस्व विकाम भोग बंध कहा, सुविलंबो रवरिण सुलहो विहा, तस् श्रुत परिचित अनुभूत सर्व काम भोग बंधननी कथा, परथी जुदा एकत्वनि उपलब्धि केवल सुलभ। देखो ऊपर भावार्थ में एक बात लिखी है, हम एक लाइन बस पढ़ लेते हैं, वी कुड नॉट रीड दी टीका। निश्चय थी સર્વ પદાર્થ પોત પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત રહે જ શોભા પામે છે। हाँ, वो मिक्सर ग्राइंडर की ब्यूटी है कि वो टमाटर को देख के डांस ना करने लगे। वो अपना काम जो पहले अकेले कर रहा था वही करने लगा। ऐसे कभी आपने देखा है जब मंदिर में बहुत भीड़ होती है और आपके पास प्रेशर होता है बाहर आगे जाके मंदिर में दर्शन करने का, आप अलग तरीके से दर्शन करते हो, और जब आप अकेले होते हो तब आप अलग। डिड यू फील दैट प्रेशर?
सब कितने ऑनेस्ट, आज तो झूठ नहीं बोलोगे आप लोग। राइट, हाँ, कि हमारे अंदर वो मायाचारी है कि what we do alone and what we do in front of people, it has huge drastic difference. आचार्य कह रहे हैं सुंदरता क्या है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर अकेली भी घूमता रहा, साथ में भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, कोई नया काम नहीं लिया, जैसे आग अकेली भी जलती रही पर कागज या पत्थर के आने पर उसने कुछ नया नहीं किया, वो जलती रही, क्यों ना हम भी अकेले भी चैतन्य रहें और ये सारे समीकरणों के बनने पर भी हम इससे बिल्कुल अलिप्त चैतन्य ही रहें, इसके ज्ञाता दृष्टा प्रेक्षक ही रहे, तो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। शोभा किस बात में है, जब हम अपने स्वभाव में रहें। परंतु आउट ऑफ ऑल दी 6 टाइप्स ऑफ रियलिटीज, जीव नामना पदार्थ एक ही ओवर स्मार्ट है, एक ही है, और इतना स्मार्ट है कि इसने अपने आसपास की सारी चीजें स्मार्ट बना ली हैं। You have smart TV in your home, you have smart homes, you have smart parking, you have everything. Gates भी smart है हमारे, TVs भी, phones भी, सब कुछ smart है. We have actually outsourced smartness, right? अब सभी smart हो गया तो मेरे smart रहने का कोई मतलब बचा नहीं है, right? So एक जीव नाम का पदार्थ है जो ओवर स्मार्ट है और वो सोच रहा है that I can dictate the terms of this reality. तो जीव नामना पदार्थ नहीं, अनादि काળ થી પુદ્ગલ કર્મ સાથે નિમિત્ત રૂપ બંધ અવસ્થા છે. Two different substances are residing at the very same space, sharing the same place. तो जहां टमाटर है वहीं मिक्सर ग्राइंडर है और ग्राइंडर को गुरूर हो गया है कि चटनी मैं बना रहा हूं. તે બંધાવસ્થાથી આ જીવમાં વિસંવાદ ખડો થાય છે. तो कितनी बार ग्राइंडर जोर जोर से चिल्लाए कि चटनी मैंने बनाई, कितनी बार आग जोर जोर से बोले कि कागज को मैंने जलाया. विल इट ऑल्टर द फैक्ट कि आग ने सिर्फ एट बेस्ट कुछ किया तो खुद को जलाया. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझे धक्का दिया, बट एट बेस्ट आपने खुद को धक्का दिया होगा. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझ पर गुस्सा किया, आप खुद क्रोध में जले होंगे. मैं कितनी बार बोलूं कि आपने मुझे चीट किया, नहीं, आपने खुद को धोखा दिया. लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस विसंवाद में मिटा देता हूं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, I could have done this better, ऐसा हो जाता तो और अच्छा हो जाता. Why could I not tell that thing at that very time? I could have stood up for myself. मैं उनको बता सकता. कितने सारे द्वंद्व हम दिमाग में लेकर घूम रहे हैं, जबकि आचार्य देव कह रहे हैं ये शोभा नहीं पाता. ये कोई गर्व करने की चीज नहीं कि अरे मिक्सर ग्राइंडर को एक्रेडिशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो चटनी बना सकता है. मतलब जिस दिन वो चटनी बनाना छोड़ देगा उसकी कोई कीमत नहीं है. ये तो आत्महत्या है. आई एम ओनली एज गुड एज आई मेक यू फील. देन व्हाट अबाउट माय फीलिंग्स? समझ में आई बात आपको? तो जब हम दूसरी वस्तुओं के कर्ता बनकर बोलते हैं कि आई डिड दैट, हम किसको मार देते हैं? अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी स्वतंत्र नैसर्गिक सत्ता को. तो आचार्य कह रहे हैं ये ते બંધાવસ્થાથી આ જીવમાં વિસંવાદ પડો થાય છે, બડો થાય, ખડો થાય છે, તેથી તે શોભા પામતો. So the all ugliness enters our lives. हमारे अंदर फिर क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, ये बहुत सारी विकृतियां निकल कर आ जाती हैं. तो हम क्या करते हैं फिर वापस बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो हम बैठकर 4 लोग इकट्ठे हुए तो हम बात करेंगे खाना कैसा था, हाउ वाज द फूड, फिर बोलेंगे सारू बनो छे, ये अच्छा हो गया आज. फिर दूसरा पूछेगा कैसे बनाया, फिर यू विल शेयर ऑल योर एक्सपर्टीज. फिर वो बोलेगा अरे मैंने भी यही किया था. फिर वो बोले नहीं नहीं टेम्परेचर थोड़ा सही नहीं रखा होगा. हाँ, we'll start talk like how is the weather today, वो सारू छे, बढ़िया छे. हाँ, तो अरे वो पिछली बार अच्छा नहीं था. इन बातों का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो पॉइंट. लेकिन हम कैसे, यदि आप 2 लोग बैठे हो एकदम से पहले तो एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, फिर उसमें से कोई एक ब्रेव आदमी कुछ टॉपिक निकालता है गलती से, और फिर दूसरा उसको कंटिन्यू करने के कि भाई अभी वापस साइलेंस वापस नहीं आना चाहिए, कुछ तो भी बोलते जाता है. आपने देखा हमारे कॉन्वर्सेशंस कितने फ्रूटलेस होते हैं.
माइंडलेस होते हैं। हम बस ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं आचार्य देव, जब मेरी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं बची, then I do not have anything to talk about. All that I talk about is काम, भोग, बंधन की कथा। किसने क्या किया? बंधन। मेरे को क्या करना है? भोग। और मेरे को क्या पसंद है? काम। एंड ऑफ द ऑल आवर कॉन्वर्जेशंस, आचार्य कुंद देव ने जैसे हमारी समस्या को 3 बातों में रखा था, ध्रुव, अचल, अनुपम, ऐसे वापस वो हमारी लाइफस्टाइल को 3 शब्दों में रख रहे हैं, काम, भोग, बंधन। Either we are accusing us, others, for having bad or good impact on our lives, or we are indulged in our own passions, काम, और या फिर हम इतने बिजी हो गए हैं इन वस्तुओं के संग्रह में कि हमारे भोगते भोगते सुबह से शाम, शाम से रात, एक ईयर से दूसरा ईयर कब निकल जाता है, वी गेट नो आइडिया अबाउट इट। ये आचार्य कह रहे हैं, जब इसने अपनी सुंदरता को, अपनी स्वाधीनता को नहीं पहचाना, तो इसकी पूरी लाइफ इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा ऑफ काम, भोग, बंध, कथा। हम सबका जीवन इससे थोड़ा अलग बने, हम भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलें। जब सारी दुनिया कह रही हो कि आग जलाती है, हम थोड़े कंपैशनेट और बोले कि नहीं, आग जलती है। इट्स योर मिस्टेक दैट यू हैव कम नियर टू द फायर, इट्स नॉट फायर्स मिस्टेक। कोई दूसरा करता है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ हो रहा है, हम कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, दैट ओनरशिप वी मस्ट टेक। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ दैट आचार्य देव इज ट्राइंग टू टेल अस। हम सभी बहुत इस सत्य धर्म का विचार, चिंतन, मनन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सी मंगल भावना से। जिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। Varantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. Namarantaram 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 Namasedaram Namaryanam Namarantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. Namarantaram Namasedaram Namaryanam Namajanam Namaloy Savasam. द्वादशांगमयी जिन्वाणी भाग लो। Someone say something first? I'll wait up. Please seat there, please. 2 मिनट वापस बैठ जाएंगे। अब यहाँ एक अनाउंसमेंट है। अब यहाँ बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, आ, तो सभी शांति से बैठिएगा और चलो। अपने पाठशाला बच्चे को सपोर्ट दीजिएगा। हाँ, जो लोग जा रहे हैं वो लोग 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाएं। कुछ आपके काम की चीज है, इतने काम की चीज है कि यदि आपने अच्छे से सुना तो आपको सोने और चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। सो दोज हु आर लिविंग प्लीज बी सीटेड। सतपथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सतपथ, आप लोग बैठ सकते हैं, पनिशमेंट नहीं है। जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग बैठ सकते हैं। यस, सतपथ का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। पिछले कुछ सालों से सतपथ एक ऐसी मुहिम चला रहा है जिसमें 1 या 2 साल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे ग्रंथ का बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकें। उसके अंदर अभी सतपथ के 2 सीजन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने मोक्षमार्ग प्रकाशक का पूरा अध्ययन किया और उसके बाद में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का ठीक तरह से अध्ययन किया। Can you talk outside? Can you talk outside and a little bit of silence?
पहले सीजन के अंदर हम लोगों ने मोक्षमार प्रकाशक का स्वाध्याय किया था, और सीजन 2 के अंदर आचार्य समंत भद्रदेव के रत्न कर्ण श्रावकाचार का हम लोगों ने स्वाध्याय किया है। अभी सतपथ का सीजन 3 जो है वो लॉन्च हो रहा है। उसका हम लोग उद्घाटन एक छोटा सा आप लोगों के सामने यहाँ पर करना चाह रहे हैं। सतपथ में से आपने कई बार एक आवाज सुनी होगी जहाँ सतपथ कहता है, मैं सतपथ हूँ। वही सतपथ जो आपको पिछले कई वर्षों से बताता आ रहा है कि गलत रास्ते पर कितने ही आगे क्यों ना निकल गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आप लोगों ने ना केवल मेरी इस बात को सुना बल्कि माना और अपनाया भी। वो सतपथ मैं ही बोलता हूँ। और अभी यहाँ से आप लोग कुछ सतपथ के बारे में एक छोटा सा गीत हम लोग शुरू करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। अब नहीं, अभी नहीं। ओके। तो हाँ, मैं अनुभव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अभी सतपथ सीजन 3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव नो जय हो, ग्रंथादिराज समय सार नोज। देखिए, हमारा सौभाग्य है, द लेगेसी ऑफ द इंटायर जैन हिस्ट्री, द ओल्डेस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट वी हैव। 2000 साल पहले सीमंदर भगवान से साक्षात मिलकर आकर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव इस धरा पर पुनः पधारे, और उन्होंने आकर 84 पहाड़ों की रचना करी, और उसमें सारे आगमों का सिरताज बना अध्यात्म शिखर का शिखामणि, यह ग्रंथादिराज समय सार। हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं। आप यदि बाकी जगह कहीं पर जाएंगे और ऐसी रिलीजियस गैदरिंग होगी, पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, क्या आप नहीं खाते हो, क्या आप पहनते हो, कैसे भगवान की पूजा करना है, क्या भोग लगाना है, वो व्हाट आर द कमांडमेंट्स, व्हाट। हम लोग के मंदिरों में क्या बात चलती है कि आकाश है, काल है, पर्याय होती है। वी लिटरली डिस्कस साइंस हियर। और ये इतना प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है दैट वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट नेचर थ्रू आउट। हमारे लिए धर्म प्रकृति से अलग नहीं है, और उस धर्म का सबसे प्रकट दस्तावेज है उसको बताने वाला ये ग्रंथ समय सार। स्वाध्याय परम तप कहलाता है, सबसे बड़ा तप स्वाध्याय होता है। और यदि हमको सच में अपने जीवन को बेटर बनाना है, इट्स ओनली आवर ब्रेन्स दैट वी कैन यूज एंड क्राफ्ट आवर ओन लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, और उसमें स्वाध्याय सबसे अहम हिस्सा होता है। सतपथ जैसा भैया ने बताया, गलत रास्ते पे हम दौड़े तो बहुत तेज है, लेकिन हम रुककर थोड़ा मुड़ भी पाए तो बहुत बड़ी क्रांति होती है जीवन की। तो ये मिशन है जो स्वाध्याय से शुरू होता है। छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला नागपुर में चलती है, और वो पाठशाला जो इट स्टार्टेड स्मॉल बट इट हैज ग्रोन सच बिग, एंड वो उसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन उस शहर के अंदर लाया। देन व्हाई नॉट बच्चे ही पढ़े, बड़े लोग भी पढ़े। तो सबसे पहले ईयर में मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ स्टार्ट हुआ टू हमारे जो जितने भी मिसकंसेप्शन उनको डिक्लटर करने के लिए। तो तर्क और युक्ति हमको मोक्षार प्रकाशक ने सिखाई। सेकेंड ईयर वी लर्न रत्नकरण शाफकाचार, जो कि हमारे आचरण पर केंद्रित था। तो हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स हमने सीखा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। दिमाग क्लियर हुआ, आचरण क्लियर हुआ। जब ज्ञान और आचरण दोनों क्लियर होते हैं, तब पात्रता बनती है समयसार ग्रंथ को छूने की। तो अब इस तीसरे साल हम सभी के सौभाग्य से हम सभी समय सार ग्रंथ पर अगले 2 साल तक चर्चा करने वाले हैं। और आप और हम देख ही रहे हैं कितना गजब का ये ग्रंथ है। हम सभी चाह रहे हैं कि इस पूरी, इट्स अ सिंपल 1008 क्वेश्चंस रहेंगे जो पूरे समय सार ग्रंथ के अंदर से रहेंगे। इट्स अ गेम ऑफ केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स प्रश्न मंच है। आपको 1008 क्वेश्चंस के आंसर समय सार में से खोजने। आप खोजोगे तो आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो समझोगे, समझोगे तो बदलोगे, जीवन पे सुंदर परिवर्तन आएंगे। तो उस स्वाध्याय के लालच से इट हैज बीन गिवन द फॉर्मेट ऑफ अ कंपटीशन, और जीतने के लिए सच में बहुत कुछ है। चांदी के नहीं, सोने के सिक्के विनर्स को मिलते हैं, और इट्स अ वेरी वेरी बिग इवेंट, एंड एवरीबडी जस्ट टू एंकरेज स्वाध्याय। तो मैं चाहूंगा हम सब इस देश में बैठकर भी समय सार को यहाँ से गुंजायमान करें, और जिन शासन की प्रभावना में ये बड़ा हमारा उपक्रम बने, हमारा जीवन समय सार में बने। ये सतपथ का समय सार प्रश्न मंच सीजन 3 आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। वील हैव अ स्मॉल इनॉग्रेशन सेरेमनी फॉर दिस। जय जिनेंद्र सभी को। ये इनॉग्रेशन के लिए मैं अपना जो जो
पहले के कमेटी के ट्रस्टी है और यहाँ मंदिर में बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। श्री बचूभाई हरनी, आप आ जाइए आगे। और अभी प्रेजेंट ट्रस्टी है अशोक भाई पारेख, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिष्ठा हुई तभी से अभी तक हमको सर्विस दे रहे, तो बस आप, हाँ हाँ, अपना जो કાકી તમે આવી જાઓ આગળ, આવી જાઓ, હા આવી જાઓ કાકી, આવી જાઓ. હા, અને સુશી કાકી તમે પણ આવી જાઓ આગળ. તો સુશી કાકી આવશે ટીકુ? देखो ये सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं और इनसे ये मंदिर बना है, आपको अभी जो लाभ मिल रहा है, तो इनका तो क्या बोले हम, इन्होंने जो मेहनत की है ना, तो बस थैंक यू. हाँ जी। चलिए सब यहाँ से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसके बारे में शुरू करूं उसके पहले छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो किड्स हैं उनके लिए भी सतपथ सीजन 3 के अंदर सबको मौका मिलता है। किड्स के 2-3 सेशन पूरे अलग से होते हैं। हमारे पिछले दोनों सेशन के अंदर लगभग 200-250 बच्चों ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन लिया था, और उसमें से बहुत अच्छे बच्चे ऐसे निकले कि पूरा का पूरा मोक्षमा प्रकाशक के अगर 10,000 प्रश्न है तो उसमें से 1,000 प्रश्न बच्चों ने याद कर लिए हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक, 2 बच्चे ऐसे थे पूरा का पूरा ग्रंथ याद करके आए थे, पूरा का पूरा ग्रंथ संस्कृत के अंदर याद करके आए थे। अभी ये समयसार ग्रंथ, मुझे लगता है बहुत रेयर चांस है कि आपको इतने अच्छे तरीके से समयसार पढ़ने को मिलेगा। ये वही ग्रंथ है, समयसार ये वही ग्रंथ है जिससे गुरुदेव के जीवन के अंदर क्रांति आई। और मैं हमेशा सोचता हूँ अनुभव जी है कि पूरी दुनिया चमत्कार के ऊपर रिझती है कि इनने ये बता दिया, इनने वो बता दिया, इनने ये कर दिया। ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान की पता नहीं क्या गजब की कला थी, कितना चमत्कार बताया कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मतलब इतनी सी बात के ऊपर जो क्रांति हुई है कि जीव अलग और पुद्गल अलग, इतनी सी बात की क्रांति है कि जिसका प्रतिफल अपन आज यहां पर बैठे हुए हैं। वो ग्रंथ समयसार ग्रंथ था जिससे उन्हें अशरीरी होने का मार्ग मिला था। उस ग्रंथ का आज यहाँ पर सतपथ सीजन 3 के अंदर इनॉग्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कृपया हमारे साथ जुड़ें। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पद्मे वोच्छामि समय बाहुण मिनमो सुद केवली भणितम्। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं वंद श्रुत के बलि कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो, समय प्रावृत को अहो। समयसार जी ग्रंथ मिला, मुक्ति का मार्ग मिला, सतपथ पर बढ़ जाऊं मैं ऐसा श्रद्धान मिला, मुझे अशरीरी होने का मार्ग 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 मिला। तो श्रीमद राजचंद्र जी को जब समयसार मिला, वो हीरों के मोल भी
देकर उसका मोल नहीं चुका पाए थे। गुरुदेव श्री को जब समयसार मिला, उन्होंने बोला मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला। तो ये वर्ष हमारे और आपके जीवन में भी क्रांति लाए, इसी भावना से QR कोड्स हैं, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, बुकलेट्स विल कम टू योर ओन हाउसेस, और पूरा आपको सबमिशन भी ऑनलाइन, इस बार इंटरनेशनल है, जाना इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और कुनकुन कान पारमार्थिक ट्रस्ट। सो इट इज वेरी मच, हम लोग इंडिया के बाहर लोगों को बहुत एंकरेज कर रहे हैं दैट समयसार की क्रांति आए, तो आप भी जुड़े। थैंक यू सो मच। जो लोग पूछते हैं कि देव की जय। जय। जो लोग पूछते हैं कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करें, ये आपके लिए मौका है शुरू करने का। चलिए, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बाहर पूरी डिटेल्स लगा दी जा रही है। हेलो। Jai Jinendra, everyone. Today our Veer Sashan kids. Jai Jinendra, everyone. Today our Veer Sashan Pathshala kids are gonna perform. It's not on. हेलो। Jai Jinendra, everyone. Today our Veer Sashan kids are gonna perform what we have done and what we have learned in Pathshala. So just stay and just help to encourage them. Thank you very much. And now. The first performance is from Kashvi, and she is gonna perform on the importance of Pathshala. So please welcome Kashvi. Okay, unfortunately, Kian is not coming up for the stage. So what I'll do is I'll do it on his behalf with Kashvi. Come. So it's a 1-minute act where Kashvi is trying to say what is the importance of Paryushan and why we should come to Paryushan and what we should be doing in Paryushan, and just have a thought about what lyrics are going through and what she's actioning that probably help us to continue. भाई जय जिनेंद्र, कैसे हो? जय जिनेंद्र भाई, पर्यूषण पर्व आने वाला है ना, बस उसी की तैयारियों में लगा हूँ। पर्यूषण पर्व की तैयारियां अभी से? भाई अपने जैन धर्म में पर्यूषण सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यही वो दिन है जब हर श्रावक को तप साधना करके अपने पापों को धोने का अवसर मिलता है। आया देखो आया पर्व पर्यूषण है आया, पापों के क्षय का यह अवसर है भाया। भादो महीने में भक्ति में रम जाना, पुण्य का ये अवसर है चूक मत जाना। अच्छा भाई, मुझे ये जानना है इस महापर्व के दौरान श्रावकों को क्या क्या धर्म निभाना चाहिए? सुबह उठ के नित्य देव दर्शन को जाना, पूजा पाठ स्वाध्याय में दिन सभी बिताना, संयम तप त्याग और क्षमा का है उत्सव, राग द्वेष छोड़ आत्मा को शुद्ध है बनाना। बोलिए पर्यूषण महापर्व की जय हो। Now Tia is gonna say the importance of Pathshala to her, so she's gonna have a little speech about it. Jai Jinendra, everyone. My name is Tia Shah, and my speech is about the importance of Pathshala.
I have gone to Pathshala for about 4 years now, and I can confirm that over the years I have learnt a lot more about Jainism at Pathshala. Pathshala has taught me how always to stay calm in tough situations. It has taught me how to differentiate between worldly pleasures and true happiness, such as sukh, which comes from within, and understand the importance of knowing the differences between my body and my soul, my Atma, which is the essence of my being. I now know that material things should not matter to me, and I should slowly detach myself from things that truly won't make me happy. Pathshala has also taught me about the importance of puja and going to the mandir. Learning these good habits will definitely help me, as it gives me peace and makes me feel calm and at one with Bhagwan. Earlier, happiness to me was toys, going out for holidays, attending birthday parties, etc., etc. But then my Pathshala teacher taught me anything which is not permanent cannot make you happy. The only happiness which is guaranteed to make you happy permanently is the happiness you'll get from attaining moksha and liberating your soul. Thank you. Krishna. Well done, Tia. So now we have Heyan, and he's gonna talk about what do I learn in Pathshala. Jai Janindra. Jai Janindra. My name is Heyan, and just now we learned from Tia why it's important to come to Pathshala. I want to share my learnings from Pathshala. Pathshala is like a special school, but instead of learning about maths and science, we learn about our Jain way of life. It's a place where we learn how to be good people and understand the world in a very special way. In Pathshala, we learn about topics like the five paps. Things like hurting living beings or being dishonest. Learning about the five paps helps me think about how my action affect others and teaches me how to be kinder. We also learn about the kashais, which are like angry, sneaky, or greedy feelings that can sometimes get stuck inside us. Our teachers help us understand these feelings and learn how to manage them so they don't control us. It's learning how to be the boss of your own feelings. My favorite part is learning about all the Jain places, Tirkshetra, and stories. We learned about a place called Nandeshwar Deep. It's very special, and even though we can't go there in real life, learning about it helps us feel closer to our Tirthankars and their teachings. It's like a magical world of peace and happiness. And we learn lots of beautiful prayers and hymns, which are called stutis. Our teachers also encourage us to memorize them and include Kantapat Yojana to reward us. These prayers help us feel calm and happy inside. But Pathshala teaches us something even bigger. It helps my soul feel at peace and brings a feeling of closure to my mind. It teaches us how to find true happiness and not just from things like toys or games. We learn that true happiness comes from within, from being a good person and being kind to everyone. And the biggest lesson of all is about moksha. That's the ultimate goal in a religion, to be completely free and happy forever. Pathshala teaches us the path to get there, little by living a good life and following the teachings of our Tirthankars. So Pathshala isn't just a class. It's where I learn how to be a better person, how to be kind, and understand right beliefs. It's really fun, and I'm always excited to go and learn more. Thank you, Jai Janendra. Well done, Heyan. Such a lovely thing. Okay, now we have Ashay, who is gonna say what is puja in Jainism, and he's gonna explain the different types of puja. Jai Janendra, everyone. My name is Ashay, and I would like to say a few words about Jain Puja. When we do Jain Puja, we do not ask for anything. We just bow down to Tirthankar's good qualities, such as truth, ahimsa, and kindness. There are two types of pujas. What are
Dravya Puja and Bhav Puja. Bhav Puja is when we do the puja without the Dravya, just pure thoughts and prayer. Dravya Puja is when we do the puja with the Dravya, which are jal or water. We offer jal to end the cycle of birth and death. Chandan, we offer chandan or sandalwood. We offer chandan to get rid of anger and get peace. Akshad, we offer akshad to get to get the treasure of joy, the indestructible treasure of joy. We offer Navedya, coconut. We offer coconuts to get rid of the greed, then push. We offer push to get rid of lust and passion. Deepak, we offer Deepak to destroy the darkness of our delusions. Deep, Dhoop, the incense, to destroy the 8 karmas. Phal, to achieve the fruit of liberation and moksha. Thank you for listening. Well done, Ashtray. Now, Riyanshi is going to tell us about Panch Parmeshti. જય જિનેન્દ્ર, તમને ખબર છે જે પરમ પદમાં જે સ્થિત હોય એમને પરમેષ્ટિ કહેવાય. પરમેષ્ટિ કેટલા હોય છે? 5 હોય છે. અરિહંત ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન, આચાર્યજી, ઉપાધ્યાયજી અને સાધુજી. એ પાંચો પરમેષ્ટિને હું ભાવપૂર્વક વંદના કરું છું. અરિહંત ભગવાન કેવળ જ્ઞાની છે, સર્વજ્ઞ છે, વેતરાગી છે અને હેતોપદેશી છે, એટલે આપણો હેતનો માર્ગ બતાવે છે. 8 કર્મથી રહે તેવા સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધશિલામાં બિરાજે છે. આચાર્યજી ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે અને દીક્ષા આપે છે. ઉપાધ્યાયજી ને ઘણા જૈન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ હોય છે. તે સ્વયં શાસ્ત્ર કરે છે અને અન્યોને પણ કરાવે છે. લોકમાં રહેલા એવા સર્વ સાધુ પોતાના આત્મ સ્વરૂપની સાધના કરે છે. તેમને હું નમસ્કાર કરું છું. અરિહંત મારા પિતા, ઋણવાણી મારી માતા, મારા બંધુ. અરિહંત થાઉ શ્રેષ્ઠ. ભગવાન મારા પિતા, ઋણવાણી મારી માતા, મારા બંધુ. સિદ્ધ થાઉ શ્રેષ્ઠ. આચાર્યજી મારા પિતા, ઋણવાણી મારી માતા, મારા બંધુ. આચાર્ય થાઉ શ્રેષ્ઠ. जी मारा पिता, ऋणवाणी मारी माता, मारा बंधु. से छे. सिद्धूजी मारा पिता, ऋणवाणी मारी माता, मारा बंधु. से छे. Just very quickly,
So a big round of thanks, of course, goes to all the Pathshala teachers who work tirelessly round the year. As we all know, they don't charge any fees or anything for it. They do it out of their own time, their own passion, their own commitment, and their own children. Probably their business or the bosses are probably wondering what do they do after 7:30 p.m. Sometimes I don't get food because Nipa is running Pathshala in the class, and I have to wait for like 1.5 hours as well. So, it's just a big recognition to all the Pathshala teachers here. A lot of parents have come to us. A few parents around the year also express their intention to help or contribute towards the expenses that the Pathshala is running. Of course, we reach out to the mandir to ask whether it's buying gifts for these kids or to run this or that, or organize this particular event where we needed props, etc., etc. So a lot of things goes around the year. So if any parents would want to sort of show their prabhana, want to show any contribution towards Pathshala, this is the time. And even kids, I know you all are earning now, you all have trading 2-on-2 accounts, especially the 13-year-olds who have been investing in gold and I don't know what not, and Nvidia stocks have gone up. So feel free to contribute. This is your time. They do, Anubhavji, these kids have trading 2-on-2 accounts. That she wants to donate. Oh my God. You are a true example, Nimit bhai. તમે કરી લેજો, સમજીને. Okay, well done, Prapti. Thank you, 21 pounds. Anybody else? 51, Kashvi and Kian. These are all kids contributing. 201, Nilesh Priti Kale. Bol. Nipa Shah, 201 pound. Labdi Shah, 51 pounds. Oh, sorry. Darshi Mehta, 201 pounds. Darshi Mehta, 201 pounds. Darshan and Jai Bhai, 201 pounds. Ek minute, I'll come to everybody. 10 pound to every child in the entire Pathshala group. So we have around 55 of them. Guys, big round of applause. 10 pound to every Pathshala group. £201 from Erg and Arshay Sethi. 201 pound Erg and Arshay Shetty. Anyway. Parents and names. Okay. So parents, please also say the names, yeah? Sorry? Huh? £50. From me. So it's from Agastya Kinjalven, 50 pounds. Okay, so all the kids, all the Pathshala kids, I just want to just want to say a big thank you to Vijayan uncle. Vijayan bhai there, Vijayan uncle sitting at the back. He's set 10 pounds to every child coming to a Pathshala. Okay, so big round of applause. Jai Dharmani Prabhavana no. Jai ho. Jai ho. Unmute, Kamal Vena phone lagao. Unmute. You can't talk on. But tell him to put it on a WhatsApp. That's on a WhatsApp call. I'll put the call on mic. Sorry. Bol. Ashi ane? Ayan. Ashi Ayan, Tejas Shah, Stephen H, 51 pound. Yaad re Tejas, kitla bata hai? Oh, please say your name as well. Say your name. Yeah. Yarvi Gosrani, 51. Yarvi Robin Gosrani, 51 pounds. Naisha Desai, 101 pounds. Naisha Pranav Ruchi Desai, 101 pounds. Aditi, 51 pounds. Can you also add it? Oh, the Manoj and Veena Chandanot. Mita Sandipsa, 501. First Lady of the Mandir, 501 pound. Ayushi Shah and Anshi Shah's 51 pounds to one. Aditi Shah.
આઈ થિંક અમારું તો થઈ ગયું પણ પપ્પાએ કાલે ભાવના ભાઈ હતી પપ્પા મને કે ઇન્ડિયન રૂપીસમાં અપાય પાઠશાલામાં તો પપ્પાને 1000 રૂપિયા આપવા છે પાઠશાલામાં. Darshan's dad, roughly 11 pounds. RV Gupta and Kaina Gupta, 201 pounds. RV Kaina, Charu Shishir Gupta, 201, right? You said 201 pound. Okay, thank you. Oh. Saksham Doshi, Saksham Jogen Doshi, Rianshi Jogen Doshi, 201. Saksham and Rianshi, Jogen Doshi, 201. Arav Sahil Malde, 501 pound. अंशी मामणिया 101 पाउंड. Bhakti Shah and Chris Shah from Birmingham. The parent's name is Kamal Shah, 51 pound. And Kathan Manan Trivedi, 51 pound. Okay, last throw. The youngest member of Patshala, Mahi Hiren Doshi, 51. Tia Vinci Shah, 101 pound. Tia Vinci, Ankit Shah. Nikunj Bhain, sorry. Oh, Arav Sahil Malde. Okay. I don't want to disturb. Is that all? But Pachi bhi kai bhavna hai to feel free to WhatsApp. Thank you. Sorry to interrupt. Thank you. Thank you everyone Thank you, for everyone. contributing for the Pathshala kids. Okay, and now we have Arhat. He's going to talk about Teen Lok, which he has learned this year in the Pathshala. Please welcome him with a round of applause. Dear Janendra, my name is Arhat and I will talk about Teen Lok. According to Jainism, the universe is shaped like a standing human figure and is divided into 3 distinct realms. We live in the middle world, Madhya Lok. Above us is the upper world, Urdhva Lok, where celestial beings reside in the 16 levels of heaven. Below us is the lower world, Adalok, which consists of 7 levels of Narak. Beyond all 3 is Siddhashila, the highest realm, where pure liberated souls live in eternal peace, free from the cycle of birth and death. Tiny living beings called niggerds exist throughout the universe, reminding us that life is present everywhere. Our soul moves through these realms based on its karma. Our ultimate goal is to purify the soul and reach Siddhashila, the state of true and eternal peace. Jai Janendra, and thank you. Thank you. Thank you so much, Arhat. And now we have Kathan. He's going to talk about 5 Pap. Thank you. Jai Jinendra everyone. Today, let's learn about 5 Pap in Jainism. These are 5 things we should try not to do because they hurt others and make our soul sad. Number 1. Himsa, violence, hurting any living being. For example, if you step on an ant on purpose, that's violence. We should be kind to all creatures. Number 2. Asatya, lying, saying something that's not true. For example, if you break a toy and say your brother did it, that's a lie. Always tell the truth. Number 3. Chori, stealing, taking something that isn't yours. For example, if you take your friend's pencil without asking, that's stealing. Always ask first. Kushil, not controlling our feelings in a good way. For example, if someone keeps thinking about fun all the time and forgets their duties, that's not good. We should stay balanced. Number 5, parigraha, greed, wanting too many things. For example, if you have so many toys but still cry for more, that's greed. Be happy with what you have. Thank you and Jai Jinendra. Well done, Kathan. Very well said. Okay, and now we have Anshi. She's going to talk about Chadravya. Jai Jinendra. I'm here today to talk about Dravya. 6 Dravya makes up the whole universe. They are Jeev,
Jeev, Budgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and Kal. Let's start with the first one. Jeev. Jeev means soul. It is a living thing that has Atma. For example, Nigod, animals, humans, and Narki. The second one is Budgal. Budgal means matter. It cannot feel happiness or sadness. For example, a table or a chair. The third one is Dharmastikai. Dharmastikai means motion. It is the principle that enables movement and activity. Well, it is an invisible force that helps with the movement. For example, a car engine is on and it is moving. The fourth one is Adharmastikai. Adharmastikai means rest. It is the principle that enables rest and stability. For example, when someone is walking in the hot sun and they stop to rest under a tree. The fifth one is Akash. Akash means space. It's a dravya that accommodates with all other dravyas. For example, the space around you. The last one is Kal. Kal means time. It is a continuous flow of time. For example, past, present, and future. Thank you for listening. Well done, Anshi. So well said. Now we have the last performance by Dhyanabdi. Chahe Andhyara Ho. She is going to perform on that one. चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। चाहे गर्मी सर्दी हो या बिजली चमकती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। हम मंदिर जाते हैं, पूजन जाते हैं, जिनवानी सुनने को हम दौड़ दौड़ आते हैं। हम पाठशाला जाते हैं, अज्ञान नशाते हैं, जिनवानी पढ़ने को हम दौड़ दौड़ आते हैं। लल्ला 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 लल्ला। हम मुनि बन जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, आवाज नहीं दे आएंगे। हम मुक्ति पाएंगे, हम सिद्ध बन जाएंगे, आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम तोड़े तोड़े आएंगे। जय जिनेंद्र। You're fine. So next we have our eldest group now, Chote Viragi group. So I know you guys are doing 10 skits on 10 dharam. So 2 saal pehle, maybe sorry, not last year Paryushan, maybe the year before, we had kicked up an initiative के पाठशाला सिर्फ मंदिर के लिए नहीं होती है, पाठशाला का फिर घर जाके रिवाइज भी करना होता है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी होती है.
सो हर घर पाठशाला का हमने मोटो जैसे निकाला था. So living on that, this year, the Chote Viragi kids have written their own skits. They have read the Chote Dada ki 10 Lakshan 10 Dharam wali book. And they've also engaged their own family members into the skit practice. So can I request all the performers today, please be seated unless it's your turn. So I only want Uttam Shama performers here. Everybody should be seated. We have enough time. Do not worry. No need to pile up there and no need to cram there. So please come and all the performers please get seated except Uttam Shama. We'll only start after that. एक second. We need that for the whole thing. Let me pass it to you. You take this. Arhan, take this. Arhan, take this. And you can take Just take it from me. No, take it from Sit here in the front. I'm okay with it. Earlier you guys can sit in the start. Wait, Arhan, you go. Okay, ready? You guys are Uttam Shama, yeah? Okay. Jai Jinendra all and welcome. Today on our Young Jain news channel, we will be talking about 10 important virtues of our Jain Dharma, also celebrated as Das Lakshan. Das Lakshan is not an ordinary festival, but it is one of the greatest festivals that is meant for all and not any particular sect. This festival is meant for all beings that want to be happy and are afraid of miseries. Hey, what's happening here? Looks like a cybersecurity breach. Hey, watch where you're going. I think you bumped into me, Rohan, but it's okay. Okay, whatever. My notebook's dirty now, thanks to you. Mistakes happen. I'm practicing Uttam Shama today, supreme forgiveness. That means I let go of anger and I forgive from the heart. But won't people just keep on doing wrong things if you forgive them? Forgiving isn't a weakness, it's a strength. It keeps my mind peaceful and free from anger. That is exactly right, Asha. That is exactly right, Asha. In Jainism, one of the highest virtues is Uttam Shama. We even practice this by asking for forgiveness from all living beings. I'm sorry for shouting at you. And I forgive you. Good. I am proud of you for accepting your mistake, and I am proud of you for being so forgiving. True Uttam Shama is usually practiced by Muniraj, but we can all try our best to do as much as we can. Really? If true Uttam Shama can only be practiced by Muniraj, what is the point of us following it? Rohan, Uttam Shama seems to be a very important part of Jainism, and it is vital for us to understand if we want to attain moksha. So we must start now. That is exactly right, Asha. Now, what do we say when we ask for forgiveness? Michami Dukram. Michami Dukram. Wow, that was inspiring. Our story of forgiveness in the Jain Dharma dates back a long way, and this was a perfect example of it. That was Krodh sorted. What about Man? Uttam Madhav is the second day of Paryushan. It means supreme modesty. Modesty is the state of peace produced in Atma in the absence of pride. Let me take you back to 2003 when India won a very big cricket match against Pakistan. Listen, the captain Gaurav Ganguly is about to speak. Honestly, this win happened because I kept the team spirit high. Without me pushing the team, we wouldn't be this far.
Everyone did okay. Without minings, we would have definitely struggled today. Excuse me, Gaurav. Can you please come for a second? Gaurav, was that necessary? What did you get from hurting your teammates? When you put yourself in front of your team, you lose more rather than you gain. Pride just can give you a moment of joy, but it actually breaks trust. That's not leadership. But why should they get any credit when I am the captain? The reason they're even here is because of me. Oh, so if I lose your logic, should I get all the credit because I am your coach and I train you for everything? Hearing this, Gaurav realizes how he put his arrogance before the very teammates that always supported him. So the next day, he says something very heartwarming to them. I'm really sorry for yesterday. I hurt you by taking all of the credit and ignoring all of the hard effort you put in. I think it's still wrong to say the win is yours, though. The win is Uttam Madhav is a very important day dedicated to emphasizing the humble, modest, and prideless nature of the soul. In reality, only Muniraj truly follow Uttam Madhav every day. However, even though we are not as great as them, we can still try to follow them step by step. Jai Jai Jinendra. Jinendra. Uttam Madhav is all about supreme modesty, which means staying humble and having no trace of pride inside you. That was man melted. Now on to Maya. Since it's the third day of Paryushan, we reflect upon Uttam Arjav, which is the Jain principle of supreme straightforwardness. Team, our new device has a flaw. It misreads data under certain conditions. But we have invested too much. And we just don't need to let people know. We just leave out the features that don't work. We don't need to alarm people. If we know something is wrong, but we still stay silent, we are not being honest. We promise to be accurate and straightforward with all the people. But we are not lying. We are just being strategic. This is how marketing works. If you know something, the truth, and you still decide to hide it, that is still lying. My parents taught me Jain values, and they said Arjav means your words, thoughts, and actions line. We shouldn't mask the truth. But we will lose our reputation and we will have a huge loss. Are you sure, guys, we want to do this? But we will gain trust, and that is priceless, and it can help our company a lot. We'll delay the launch and fix the flaw. Tell our customers the truth and let straightforwardness be our strength. They chose Arjav, not because it was easy, but because it was the right thing to do. We can't just act honest, we must be honest in intent and avoid hypocrisy and deceit. Uttam Arjav teaches us that we should look inwards towards our soul, which is passionless by nature. Maya checked out. Love lovers, be aware. Hello, Mr. Modi. Hello, Bhaiya. How are you? How are you? I'm good, good. Mr. Modi, I know you are here for ChatGPT
version 250. It will be for India only $350 per week. What, bhaiya? So expensive. Well, Mr. Modi, the cost is only about $50, but the tariff is about 600% because in America, we love profits. 600% tariff. You are such a greedy pig. इतना profit करके क्या करोगे? Are you going to eat the gold? You already have a gold toilet. What else do you need? Trump, have you ever heard of Uttam Soch? Short? What is that? Uttam Soch is the concept of not being greedy and being content with what you have. Explain to me a little more about Uttam Shorch, please. A person who is always chasing money will never have the time to truly enjoy it. A virtueless person, although addicted to gaining wealth, will never get it. And a virtuous person, although not addicted to gaining wealth, will get it easily. So is dollar the only type of greed, Mr. Modi? No, there are other types of greed as well. For example, the greed of fame, the greed of fair complexion, and the greed of name. But the real greed is the greed of the five senses. But Mr. Modi, you do know, right? I do contribute a lot to charity too. Well, do you use that charity to help you become president next year? Mr. Modi, I think all these people know what do I use my money for. Well, just like you, some people also do things that may seem as if they are extremely generous and giving, but really, they are greedy for fame and money. So coming back to Uttam Shorch, how do I achieve that, Mr. Modi? Uttam Soch is impossible to achieve without initiating Atma Dhyan. In fact, none of the 10 Das Dharmas are possible without initiating Atma Dhyan. So Mr. Modi, you're saying that I should practice self-realization and keep consistently practicing it until I realize the Supreme Soul being. Mr. Modi, you've completely changed my mind. You can have the ChatGPT for $50. Thank you, Bhaiya. Uttam Soch denotes holiness in contentment, i.e., purity. Attachmentless purity is found with right belief and is the religion of supreme contentment. Lobe lifted out of your lives. Now Asatya needs deassembling. Scene 1, at home, before school. Saksham, is your math test out? Results out? Not yet. Maybe tomorrow. Okay, let me know when they do. Yes. Scene 2, at school. Hey, did you get your maths test out? Yeah, I did, but I failed. So I told my mom it's not out yet. Just tell her it's better than 9. You're right, but she will get mad, so I can't. Jai Shnain, good morning, class. Today, we're going to discuss about the 5th day of Paryushan. So today is the 5th day of Paryushan, which is Uttam Satya Dharma, which is about truth. So, in most the religions, truth means not lying. But Jainism, it has deeper meaning. True means Satya, it is not lying. But we shouldn't say something which is harmful or not kind. So our words always should be kind and non-harmful towards others. So the words, the truth which wounds others, it is not pure Satya. There is a story from Prathamanuyog about poor merchants. If you
Reyanshi, I hope you have seen that. Let's see a bit about it. So, there was a poor merchant who was asked about by the thieves about the traveler. So, there was a wealthy traveler, and the thieves asked the poor merchant where about the traveler went. Even though the merchant knew where the traveler went, he just thought, and he said in a way so that wealthy traveler's life is not in danger. So, in that way, he protected the truth. He said the Satya, but made sure that no one is being harmful or it's not, and he still remained the truthful. Sometimes truth requires courage, it requires wisdom, but lying, even in small matters, always plants seeds of fear and guilt. Jai Shanain. So the truth isn't just about the marks, it's about being honest. Maybe I should fix this. Scene 3. Back at home. Mom, I need to tell you something. Yes, what is it? I lied this morning. I got my test back, but I failed. I'm not happy about the marks, but I'm proud that you chose Satya. I was scared, but then I remembered what the teacher said, so I chose to say the truth. That's good. In the Gamba Jainism, Satya, truth, is one of the 5 great vows, but it's more than just not lying. It means speaking only when it is beneficial and harmless. Even the smallest lies tie us in chains of karma, while the truth sets our soul and brings peace. Saksham learned that lying out of fear only creates more fear, but when he chose the truth, he found clarity and freedom from the bondage of karma. By practicing truth in our words, thoughts, and actions, we take one step closer to purity of the soul and towards the ultimate goal of liberation. Thank you. Uttam Satya is attained only by them who have deep interest in it, know its significance, and have enthusiasm for its attainment. Satya sorted, let's see how self-restrained we are, or not. You sit in the center. Tu અહીંયા બેસી જય Jai Jinendra, everyone. On this stage, 2 worlds are about to meet. One, a world of great material success, and the other, a world of spiritual discipline. Today, we explore the concept of Uttam Sanyam, or supreme self restraint, through the eyes of 2 very different men. Good morning and welcome to our special broadcast to find true happiness. Today we have 2 people. One of the world's most influential figures, Mr. Mukesh Ambani, and a Jain Shravak, Mr. Shah, with us. Hello, it's a pleasure to be here. Thank you. Mr. Ambani, as we know, the world is always watching you. Tell us, what's the latest in your incredible life? I like to be connected and be simple as much as I can. Oh, and I recently acquired the GX52 Lotus Yacht. Wow, but people want to know,
What is all this for? With all this wealth and power, are you truly happy? Of course, I'm happy. Look at me, I'm so rich. Let me ask Mr. Shah about his thoughts on true happiness. Mr. Shah, what do you think? I believe that true happiness is not defined by material wealth, but by freedom from karma through controlling the mind, senses, and actions in a disciplined life. That makes sense. Mr. Ambani, what do you think of this as you have so much wealth? Why do you keep acquiring more? More yachts, more cars, more houses? Why do you need them if you're already satisfied? One can never have too much money, no matter how much they have. That's exactly my point. There's no limit on the amount of money you can earn. You will always feel unsatisfied and want more. True happiness comes from self-control and not from material pleasures. This is known as Uttam Sayam Dharma. I think I understand now. True satisfaction doesn't come from what you accumulate. It comes from being able to restrain our senses and desires, leading to inner peace. So, to conclude, Uttam Sayam means detaching the consciousness from other objects and concentrating it on the soul through vows and restraining passions and desires. Thank you for coming on the show. In this interview, a powerful lesson has been learned. Uttam Sayam Dharma is more than just a virtue. By restraining your desires, you prevent the accumulation of new karma and begin to shed old karma. This leads to inner peace and ultimately liberation from the cycle of birth and death. Jai Jinendra. Uttam Sayam means no inclination or longing for sensual enjoyment, which is observed in awakened souls who possess supreme restraint. Now self-restrained, let's move on to austerity, a term people living in the UK now know very well from our finance minister. Why are you looking so stressed? I'm trying to finish my homework, but it feels like a tough battle against my phone, the notifications, the game console. I just can't put my mind to it and get it done. I mean, you should practice stop. You mean like the tap which water comes from? Or like the tap of the phone? No, not exactly. Top is a Jain principle, which consists of giving up bodily comforts to discipline our minds. Can you give me an example? Yeah. An example is how you train for cricket, or if you practice for playing a piano, you practice, you focus, and you master it. Just like that, top is very similar in that sense, except it's training your mind. I think I'm starting to understand it now. Yeah. And so there are two types of tap. Baya tap, which is chovyar and fasting, which helps you gain control over the five senses, and abhyantar tap, which is swadhyay and meditation, which helps you gain control over the kashai. So how can I implement this in my life? You can um yeah, so if you take when you finish when you do your homework, when you finish your homework, if you restrain yourself from using your phone, you don't, and you get good marks, you don't only get good marks, you get a sense of accomplishment afterwards. That's a taste of what TOP can do for you. Okay. Thank you for telling me about TOP. You're welcome.
Having abandoned the desire of all sorts of attachments, the undergoing penance in the intrinsic nature of self is known as Uttam Ta. From austerity, let's move on to renunciation. Wait, do I literally say Jade Linder child? Naisha, hurry up. Javish will be here soon and we'll be getting late for temple. That was quick. So, Naisha, what have you decided to give up for this Das Lakshan Dharma? What are you going to tyag for these 10 days? Mm. Yeah. Tyag is when you give up something because it is not useful to you or it's no good for you. Oh, so I have a bag of old clothes that don't fit me anymore. What if I just donate them to children in need? Actually, giving away old clothes will not do. Donation is a form of charity which people often confuse with tyag. But dan, charity is also known as dan. Dan is something when you give up something which you own or you value. However, tyag is when you give up something, deeming it to be worthless in your journey to attain moksha. Okay, I have a great idea. What if I give up my school? That way I can tyag my homework and studies for the next 10 days. That's very cheeky of you, Naisha. You can definitely give up school and studies, but only if you utilize all that time to focus on your soul. But if you are thinking that you'll spend that time on your phone, TikTok, and sleeping, then that's not tyag. That's just being lazy. Oh, in that case, how do I know what I should give up? Think about something that you do, you like, you eat, which is probably harmful to you or other living beings. Something that ties your soul down with pap instead of freeing it. Okay, I guess I'll think about it. Okay, I'll finish up a few chores. We'll wait for Javish and then we'll leave. Jade Linder, Naisha. Jayaninder Javish. Why are you looking frustrated? What happened? It's my mum. She wants me to give something up for Das Lakshan, but she says no to all of my ideas. I don't know what to do. All moms are the same. Mine made me do this as well. Really? What did you do? I decided that I will give up watching television during these 10 days. What? No way. I could never do that. I don't even understand how this helps us attain moksha. Well, the whole concept behind tyag is to get rid of your rag and dvesh for worldly attachments and instead use this time on foregoing some religious activities, like maybe coming to the temple more often or reading shastras. And our Puja Digambar Muniraj also follow this quite strictly, as they give up almost everything, including their house, their family, and their clothes. Okay. Thanks for clearing that up. Okay. Oh, Javish, you're here. Shall we leave now? Oh, I know what I'm going to give up for Das Lakshan. Have you decided? Yeah, I'm not going to eat anything that is from restaurants or store-bought, so I'll only eat homemade food. Oh no, that means I'll have to cook more. But just kidding. I'm so proud of you, Naisha. Very important pledge, and I'll follow this as well. Jai Jinendra. Let all souls give up all sorts of external and internal possessions to get infinite happiness by understanding the essence of Tyag Dharma. Now, towards non-attachment. Hey bro, what did you discuss in Pachara today? Today in Pachala, we were just discussing about Akinchan Dharma. It was such a good class. Too bad you're sick. What is it? Is it a different religion? No. Akinchan Dharma is the act of gathering more stuff than we actually need.
Um, and that none of this stuff belongs to us. Oh, you're talking about one of the days of the Das Lakshan. Yeah, and I believe that we should follow it in our daily lives. Hey, sons, what you up to? We were just discussing about Akinchan Dharma. It was taught in Pachala today. Oh, God, yeah, that is today, isn't it? Akinchan is nothing but a parigraha, right? Yes, that's what we were just discussing. And we realized that we have an excess of toys, games, and clothes, more than we'll ever need. True, and mom and dad are still thinking of buying another house in Nairobi, even though we already have two. Surely we are gathering more and more and more. He's right. He's totally right. All this is something that we should not be wasting our time getting more and more things. This is a type of parigraha called bahirang, or outwardly looking parigraha. But let's also not forget that akinchanya also means the inner, letting go of our inner parigraha, which includes things like the four kashais, and most importantly, mithyatva, which basically is the oneness that we attach to everything except the soul. So let's try and do a little bit more Atma Dharma and Chintan to achieve Uttama Kinchanya Dharma. Whatever the world may say, being the root of all evils, parigra is the biggest sin, and our kinchanya is being devoid of all sorts of passions and false beliefs is the highest religion. Finally, let's not leave out celibacy. Welcome to Das Lakshan TV, where we discuss real-world issues and their solutions. Today's breaking news is how the world has lost its color. People are battling internal wars. Everywhere I look, all I see is misery. Trump has been accused of harassing women, and Jeff Bezos' affair caused the most expensive divorce in history. Normalization of greed and lust leads to trauma and loneliness in children because they struggle to adjust to the new family dynamics. All I see is broken families, rising crime, restlessness, endless greed, people chasing pleasure but finding emptiness. At some point, we have to ask ourselves, is this what I want from life? Is there a way out? The answer lies in an ancient virtue, Uttam Brahmacharya, or supreme celibacy. Now, you may hear the word celibacy and think it's only for monks, but let's understand it clearly. Uttam Brahmacharya is not just about saying no to passion. It's about self-mastery. It's about controlling instead of being controlled. It's about using our energy wisely instead of wasting it. Think of a natural element such as fire. It's uncontrollable. It can burn down houses. But when contained, the same fire can cook food, give warmth, and light the way. In the same way, human passion, when uncontrolled, destroys peace. But when guided with brahmacharya, it becomes a source of strength, clarity, and compassion. For monks, Uttam Brahmacharya means celibacy. However, for ordinary folks such as you and me, it just means controlling one's desire. Living with compassion and care. Why is this important? Because true happiness does not come from chasing pleasure. True happiness comes from peace of heart, peace of mind, purity of heart, and strength of soul. A person who practices Uttam Brahmacharya has clear mind, strong willpower, and boundless compassion. The world needs this brightness today. If each of us practices a little self-control, a little purity, imagine the peace it would bring to our societies, our families, and ourselves. Uttam Brahmacharya is not a burden, it's a freedom.
freedom from weakness, freedom from restlessness, and freedom from slavery to desire. It is a path to living with strength, purity, and peace. Stay tuned as we discuss more real-world issues and problems. Thank you for joining our show. Jai Jai Jinendra. Jinendra. Brahmacharya is itself the highest religion which can be attained by knowing and realizing the pure nature of Brahma, also known as the Self-Soul. Cool, thank you. All the Chote Viragi kids, please come forward. It's okay. Without Jaivish, please come forward. So just a big round of applause for all the Chote Viragi kids. Okay. These kids are they are not only just doing Chote Viragi Pathshala, but they are some of them are also attending Junior Parmagam Honors, which Nimit Bhai runs. So big thank you to Nimit Bhai as well for tirelessly taking Junior Parmagam Honors on a Sunday evening. So big thank you. You can see these. This was the first batch of our time, sort of, these guys, when Neerav, Nipa, Ruchi and the initial, Pathshala starters and, started the Pathshala here at the Mandir for this group and they've come a long way. They all have written their skits today and they've taught us today how do we apply all the 10 virtues. These young Jains have not only managed to do Jainism, but they've also been doing 11 plus GCSEs and A levels, and are confident to have written and directed and also got their parents involved. A big credit behind this goes to Niralben, who is actually not in UK. She moved back to India a few years back. But she has been still continuing to take Pathshala. So Niralben has been continuously every week teaching these kids without any break, and she's been working with these kids term after term to see where they are. So I just want to Neerav, are we ready? Okay, I just want to kids. There's a surprise for you. Their devotion towards Jai Jinendra. Today, Kids, turn my around. heart There's is a full surprise. of pride and joy as I reflect on our children's performance and, more importantly, their devotion towards Jindhar. Living in the UK, we all know how many distractions surround them. And on top of that, they don't get to interact and mingle with Sandharanis in their daily lives as they might back in India. And yet, despite these, what they have achieved today and what they continue to do is truly extraordinary. I have been fortunate to know them from the first day we started Pathshala in London until now. I have seen them grow, not only in age, but in maturity, understanding, and the way they are slowly imbibing the Jain values and systems in their daily lives. What strikes me the most is their devotion. They rush back straight from school to join Pathshala, and many log in while their way back. This shows an incredible sense of responsibility and eagerness to learn. The kind of thoughtful questions they ask and the curiosity they bring, it fills me with hope and pride. These are the true signs of the disciples of Gurudev and towards the path of moksha. As Ben Shri said, Lagni ane ruchi hovi જોઈએ તો પુરુષાર્થ ઉપડે અને મોક્ષ માર્ગ ખુલે. In these children, we can clearly see both ruchi and lagni, the deep interest and the genuine joy for Jindhar. And in today's time, and especially in a place like London, that is such a rare and beautiful thing. They are not just learning theory, they are holding the Jain flag high, living it in their daily lives. They are all showing us it is possible to be Jain
to stay rooted in our dharma, even while growing thousands of miles away from where it all began. As teachers, parents, and community, we feel blessed and proud to witness this. These children are gathering the true jewels of our dharma with open hearts and minds. And more importantly, they are choosing to be Jain, not only in words and actions, but also in their thought. To all our children, I want to say, we are proud of you. Keep walking in the same path with same sincerity and zeal, and you will be an inspiration to all of us. Jai Janendra. Should we give? Neeral teacher has done an amazing job, and she's just not teaching Jainism from the book, but very practical way. So that's why these kids can follow. So big round of applause for Neeral teacher. She is in India. She doesn't look at the time difference and everything. She adjusts because for her, the Jainism is a priority and the kids' commitment. So big thank you to the kids and the parents. And I have got something to say for the kids. Look, you got a part 4 Kant Path Yojana, so you got a reward. Today you got a reward of a 10 pound from the Vijayan uncle. And you know another reward is pending, which Anubhavji said, like, if you take a part 4 Satpath, there is a prize of a gold coin and silver coin. 250 children took part last year, you said. So we have got 50 children here. So we can show them 50 children, out of 50, at least 30 children should take a part for Satpath. And we are going to celebrate in a big way for the next prize. So can we do that for Samaysar? And you all have showed today that you have got capability to read Samaysar and follow what Gurudev has said. So please take a part for Satpath event. Yeah. And all the children stay in a line. All the Patshala kids come. So we will take a nice picture. Please stand accordingly your height and make sure no one gets hide. Please adjust yourself. Pranjana, all the children's come. All the children's comes. All the children's. But make sure you, all the children's, even who is this new girl? Okay. Thank you.